Okay, good morning, everyone. Good Good morning, morning, sir. sir. Okay, so how many of you have difficulty in HTML? Right, yes or no in chat box. Right, yes or no in chat box. No issue. There's one saying no issue. Sir, navigation bar. Navigation bar is the issue. Okay, I will deal with that. Yes, sir. Okay, Pratham, yes, sir. Okay, Pratika is responding. Arjun is saying no issue. Pratham, I have some issue. Pratham, what are the issues? Could you please share? You can unmute your mic. Pratham, sir, my mic is not working. Then you can write here, na? Otherwise, how could I identify your issues? Sama is saying no any issue in HTML. Okay, good, great. Hussain is also saying no issue. Pratham, I have issue in assignment. Okay, okay. Assignment matter is different. I am in talking in general that if you are you comfortable in writing HTML codes? Siddhkit, I'm not. You are not responding. I need response from you people also because you are new to, meaning you are latecomers actually. Sir, navigation. Arihant. Okay, Arihant, can you could you please share me what is the issue? Abhay Chaudhary, browser problem. So you have to look for the standard coding. आप मेरे पुराने वीडियोस देखो जहाँ स्टैंडर्ड कोडिंग मैंने बताया हुआ है. सर वो नेविगेशन बार की कोडिंग समझ में नहीं आती है. नेविगेशन बार की कोडिंग समझ में नहीं आती. क्या CSS समझ में नहीं आता या HTML उसका समझ में नहीं आ रहा? सर लाइक होवर ये सब मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर समझ में नहीं आती है. वही ना, CSS वाली प्रॉपर्टी ना. देखो कभी भी यस सर. कोई भी चीज को ऐसे मत बोलो. मुझे जब जितना आप पढ़ चुके हो ना वैसा सब जो भी कोड है आपके पास उसको बाइफरकेट करने की कोशिश करो. सर दिस इज द HTML पार्ट, दिस वन इज CSS एंड दिस इज JavaScript. Okay, when you are reading also at that moment you have to bifurcate the code that these are the three parts, or later if you will include PHP code then you should say you should read in that aspect also and then try to identify which part is difficult for you. Clear? Okay, so this way you can diagnose Okay, your sir. issues, then only we can proceed. Otherwise saying wholesome problem is not worthful. And you are right, you may have some confusion in understanding Hoover and all. So I have not covered that part in detail because that was not required at that moment. So later when we will move for the real web application and all that, there we will deal with that. Okay, so not an issue. Just if for the time being, if you are able to fix it, if you are able to uh, fix it in your template, then it's fine. See, we have to read some big issues from here and onwards. Actually, I want to devote more time on PHP and the functionality of web pages. These design parts are trivial. Okay, meaning that this is not that much important. And anyway, I will look into it because many of you have the similar problem. So if it is a majority, then I have to deal with it. Not an issue. Mithul have also the same kind of problem in navigation bar and rest of the things are okay. So let me share my screen first. HTML forms. See, actually we will move into PHP. Okay, so we will actually look into the PHP forms. You can see
in PHP tutorial on the left side menu, if you will go down, then the second subsection is PHP forms. And if you will click on the form handling or anything, then you will have this page. Okay. So combining two navigation bar is big issue to me. Hussain is saying combining two navigation bar is a big issue to me. Then ask someone who has already did this. समझ में आया हुसैन? है ना? तो ग्रुप इसलिए डिस्कशन फोरम इसलिए है ना कि आप उस वहां पे डिस्कस करो. माइक्रो मैनेजमेंट कीजिए. जो भी माइक्रो लेवल आपके इश्यूज हैं उसको पहले सेल्फ हेल्प डिस्कशन कीजिए. That's why I just created that group ना. Clear? Today I will expect from everyone, mind my words, today I will expect from everyone to discuss on this navigation bar issue. Okay, please discuss among yourselves and try to find out where you are having issues. Clear? And then still if you have any issue, I'm here. गूगल कीजिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए. देखो ये कोर्स में अगर मैं इतना माइक्रो लेवल पे अगर आपको सॉल्व करता चलूंगा तो ऐसा होगा कि मैं कम चीजें कवर कर पाऊंगा, है ना. कुछ चीजें अगर आप खुद से सॉर्ट आउट करोगे, मैंने चीजें इंट्रोड्यूस कर दी, अब इसको इंटरनेट पे पढ़िए, वीडियोस देखिए, सॉर्ट आउट कीजिए. ट्रीट मी लाइक ए गाइड फॉर योर कोर्स, कि मैं दिखा रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में यू हैव टू रीड, गो फॉर इट. क्लियर? तो इस ऐसे पढ़िए थोड़ा सा. मैं आई हैव प्लान्ड समथिंग मोर. योर सिलेबस इज गोइंग टू एंड. If I will complete your syllabus, I have to complete your syllabus, then your syllabus is going to end within 2-3 days. But I want to go beyond that. I want to give you a real experience of web development. I am planning for WordPress development, which is the industry standard nowadays. And if you know WordPress, it's a best thing in web technology nowadays. Okay, anyway. So try to discuss among yourselves, please. हाँ, थोड़ा discuss करो. Good. Your gestures are encouraging. देखो फॉर्म हैंडलिंग में हमारे पास क्या है कि अपने पास इससे पहले क्या था, फॉर्म था. फॉर्म क्या था? HTML फॉर्म. HTML forms are like this. So those who are new and those who have some kind of issues with form can look into it. Treat it as a revision point. So I will deal with this form submission. देखो हमने जब भी फॉर्म भरा और जब सबमिट किया तो ये एक एरर पेज आ जाता था, है ना. डाटा वाज रिसीव्ड बट उसको कुछ करना नहीं है ना. और यहाँ पे ये मुझे क्या बताता था, सी योर इनपुट वाज रिसीव्ड. यहाँ जब मैंने क्या फिल किया था, दिस वाज HTML फॉर्म. यहाँ मैंने Zone2 फिल किया, सबमिट किया. सबमिट करने पे ये पेज आया. इस पेज पे क्या बोला, सबमिटेड फॉर्म डेटा, योर इनपुट वाज रिसीव्ड, f name equal to this and l name equal to this. The server has processed your input and returned this answer. ठीक है, यही तक हमारा पार्ट था. यहाँ पे नोट लगा दिया इन्होंने, कहा कि दिस ट्यूटोरियल विल नॉट टीच यू हाउ सर्वर आर प्रोसेसिंग इनपुट. मतलब इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस इनपुट के साथ क्या होगा, दैट वी आर नॉट डीलिंग. ठीक है, मैं बस ये बोल रहा हूँ, HTML बोलता है कि मैं बस बोल रहा हूँ कि फॉर्म ऐसा दिखेगा, है ना. फॉर्म ऐसा दिखेगा, वो करेगा क्या ये मेरा मतलब नहीं है. तो कौन करेगा वो, तो बोल रहा है प्रोसेसिंग इनपुट इज एक्सप्लेन्ड इन आवर PHP ट्यूटोरियल. अगर PHP पे क्लिक करेंगे तो ये PHP खुलता है और वो बोलता है कि फिर से तुम PHP पढ़ो एंड देन देखो कि क्या होता है तुम्हारा. ठीक है, तो हम लोग PHP में जाएंगे. वी विल सी PHP, हाउ PHP elements are there which accept the form data and how we could process this form data. जनरली क्या होता है, फॉर्म का वर्क ही है डेटा को प्रोसेस करना, है ना. आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो
Wait for a minute. Okay. So sorry for interrupt. जब कभी भी हमारा फॉर्म आएगा वो फिल होने के बाद होगा क्या, मैं पहले इन शॉर्ट बताता हूँ कि पीएचपी वर्क कैसे करता है, फिर हम लोग बैक जाएंगे। ये फॉर्म को हम लोग 2 से 3 लेक्चर में डील करेंगे मिनिमम, मैं उससे ज्यादा भी लेने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट, ये बहुत एसेंशियल है और यहाँ आपको पीएचपी का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट अस सी, आई विल इंट्रोड्यूस फ्यू पार्ट like see this is HTML form. First I should tell you फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म बनाने के लिए ऐसा वो करना पड़ता है, फॉर्म का ओपन टैग एंड क्लोज टैग इज देयर। अब इस ओपन क्लोज में आपको क्या क्या इंसर्ट करना है, जनरली वी हैव नेम, कोई भी फॉर्म अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो यू हैव फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और क्या होता है एज जेंडर, और क्या क्या होता है, कुड यू प्लीज रिस्पॉन्ड। एड्रेस, मोबाइल नंबर, और क्या, और कोई, जेंडर, और एनीवन एल्स। अरे सब सो गया क्या? सर Sir, पर्सनल email और address. प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ वो मुझे मत बताओ, मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट बताओ, यू आर ए वेब डेवलपर, ठीक है, लाइक नेम, यू शुड नॉट से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, जस्ट टेल मी द एग्जैक्ट वन, लाइक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड, marital लाइक status, City, हाँ mother's name, father's name, गुड 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 Aadhaar card number, great, Aadhaar card number is there sometime, है ना, there are some mandatory fields where a star is marked, ना स्टार मार्क होता है मैंडेटरी फील्ड्स में, कभी कभी कोई ऑप्शनल फील्ड होता है जिसमें स्टार मार्क नहीं होता है ना, these are general form and add a we passport have size photo, yes, great, this is one of the good example, a passport size photo, we have to upload it and it is the part of our form, how could we deal with, है ना, so there are two part, one and is designing, see the looks and feel of your form depends on HTML, clear, and how form data are taken from the form and given to the some other process is part of HTML, sorry, PHP, clear, meaning designing is part is for the HTML and other rest of the manipulation or processing in general, we could say processing of data is part of PHP. First thing first, okay. What I want to highlight here is anyway we will see. Yes, Hussain is saying I agree to term and condition. Ah, good, this is also the same example, column and all. So see, input may belongs to these category, these are not exhaustive list, this is, let me show you, meaning you may want to enter a text, you want to enter, you have a radio button क्या कैसा होता है, हम लोग देखते हैं अभी, कुछ चेक बॉक्स होते हैं, dot, सबमिट बटन होता है और बटन्स होता है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है, मतलब मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू नो एनीथिंग, बट इफ सम ऑफ यू, सर चेकबॉक्स में बहुत सारे हो जाते हैं और रेडियो बटन अपना जेंडर होता है, जैसे मेल या फीमेल से किसी पे लगा सकते हैं। और कोई, एक ही को चॉइस कर सकते हैं, मतलब एक ही को चॉइस करना रहता है। हाँ रेडियो बटन में किसी एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं,
है ना? This one was also correct. चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर अपने पास होगा, देखो रेडियो बटन ये है, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो या तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा या इस पे या फिर यहाँ पे, एनीवन। लेकिन चेक बॉक्स होने से क्या है ना कि मैं मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब जो जैसे जेई के भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें दोनों ही बटन्स का इस्तेमाल होता है। जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो they are also using radio button as well as the check box, clear? तो जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते समय वी शुड थिंक कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कोई पर्सन मेल या फीमेल हो सकता है, दोनों में चेक बॉक्स यहाँ लगाना इज ए रॉन्ग डिजाइन अप्रोच। कंपलसरी है कि यहाँ हमें रेडियो बटन ही लगाना, ठीक है? ए पर्सन मे बी आइदर अ फादर or mother, so we should fix it that whether you are father, you are something else. And there are some other types of input field that is more convenient for different purposes, clear? So I may show you those parts. देखो यहाँ पे क्या है, बटन हो सकता है, चेक बॉक्स इज देयर इज अ टाइप कलर, another one is date and date time, email may be one of the input type। email में क्या होगा, कंपल्सन। ईमेल फील्ड बोलता है कि जब तक तुम मुझे @ और डॉट, ये दो तो हर ईमेल आईडी में होना है ना, एवरी ईमेल आईडी मस्ट हैव ए @ symbol and a dot symbol, .com, .in, .edu, .ac, anything, but dot must be there, okay? देन इनपुट फील्ड में फाइल होगा, जब हम लोग अपलोड करना चाहेंगे कुछ भी, है ना? इनपुट फील्ड में हिडन हो सकता है, दैट वी वांट टू हाइड। इमेज अपलोड करते समय हमारा हो सकता है, दैट इज इमेज। मंथ, नंबर, वी मे वांट टू हैव ए पासवर्ड काइंड, बिकॉज पासवर्ड इनपुट फील्ड का स्पेशलिटी क्या है कि क्या होगा खासियत, कैन यू गेस? स्टार में जाता है। हाँ, हाइड मतलब हो जाएगा विजिबिलिटी, पासवर्ड तो लिखा हाँ है वो। उसका वो सिंबल में चेंज कर देता है ना? विजिबिलिटी नहीं रहती। गुड गुड गुड। And radio button, we know range is a different thing. We will see reset is a thing, search is there, submit is there, okay, tell, text, time, URL में हम लोग जो URL का मतलब किस किस को पता है बताओ, what is URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट, रिसोर्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल क्या होगा? यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सर, यूनिफॉर्म। ठीक है, फैसला कर लो तुम लोग। एनीवे, ठीक है, ये आप फर्स्ट मॉड्यूल में भी पढ़िएगा। so these are some input field which is taking this kind of input। तो ये input field जो होगा ना, वो बोले कि मुझे इस kind का input चाहिए, किस कैसा input मुझे लेना फॉर्म में से, वो ये डिफाइन करता है। तो input लगाते कैसे हैं, देखो input लगाने का तरीका क्या होता है, पहले तो ये बताया ही स्टार्टिंग में इसने कि फॉर्म स्टार्टिंग एंड फॉर्म क्लोज करेंगे, ठीक है? हमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये पहले ये टेक्स्ट दिखे, फिर ये इनपुट एलिमेंट दिखे, है ना? ये इनपुट एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कुछ इनपुट कर सकते हैं, ओके? दिस इज इनपुट एलिमेंट। सर हाँ बोलो। सर हिडन वाला जो टेक्स्ट इनपुट है उसका मतलब क्या? हिडन वाला देखेंगे जब हिडन पे जाएंगे, ठीक है? अभी इन जनरल देखो कि कैसे काम करते हैं। ओके सर, we will see। thank you for your question। अच्छा है, if you are asking, I feel better। anyway, तो हमें बस ये फिक्स करना है, तो इसके लिए लेबल यूज करते हैं, मतलब कोई टेक्स्ट अगर तुम्हें लिखना है फॉर्म के अंदर, और अगर इनपुट डालना है तो हम लोग इनपुट टैग का यूज करते हैं, ठीक है? ये दो टैग समझ में आ गया। अब जब कभी भी हम लोग लेबल डालेंगे तो हम लेबल का नाम देंगे फॉर एफ नेम। अब एफ नेम के लिए क्यों लिखा है, देखो ध्यान देते हैं। देखो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये इनपुट इंपॉर्टेंट है, लेबल उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है? बिकॉज वी आर राइटिंग ए फॉर्म,
तो इनपुट में सबसे पहले इसका टाइप होगा कि इसका एक कौन टाइप का इनपुट लेगा, तो टेक्स्ट इनपुट लेगा। इफ आई एम राइटिंग टेक्स्ट तो इट विल टेक टेक्स्ट इनपुट। जैसे हम लोगों ने इस फॉर्म में देखा था ना कि ये बटन, चेक बॉक्स, फाइल, ईमेल, इमेज इतने सब टाइप का इनपुट ले सकता है। तो मैंने डिफाइन करा दैट इट विल टेक टेक्स्ट। अच्छा, एंड वी हैव टू डिफाइन इट्स आईडी। आईडी क्यों? क्योंकि इस इनपुट का यूनिकनेस के लिए कभी भी अगर इस इनपुट फील्ड को हमें से डाटा लेना होगा या डेटा फिल करना होगा या कुछ भी जो इस इनपुट फील्ड के अराउंड होगा, उसके लिए हम इस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम नेम फिक्स करना होगा। अब इन सब का यूजेस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम देखते चलेंगे, कौन ऑप्शनल है कौन नॉन ऑप्शनल है, ये भी हम आगे देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग सर ये we have आईडी वापस बता दो। आईडी कुछ नहीं बच्चे, कोई भी देखो, इसकी आईडी अलग है, इसकी भी आईडी अलग है ना। आईडी क्यों होती है? तुम्हारी भी एक आईडी है ना, आइडेंटिटी कार्ड पे एक एनरोलमेंट नंबर तुम्हारी आईडी है ना, और आधार नंबर। मतलब इनपुट को आईडी देना जरूरी है? हाँ, अभी मैं क्या बताया, अभी ये जरूरी है, जब ऑप्शनल होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यू शुड रिमेम्बर कि जब कोई भी हम इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे, इनपुट टैग क्रिएट करेंगे, तो वी हैव टू राइट इट्स टाइप ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें किस टाइप का डाटा जाना है। इसकी आईडी फिक्स करेंगे और इसका नेम फिक्स करेंगे। अब देखो, ये जो दो इनपुट हमने सेट कर दिया, तो यहाँ पे हमें दो इनपुट दिखने लग गया। ठीक है, सो वी शुड लुक इनटू दिस लेबल फर्स्ट। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता इसलिए हूँ ना टेक्स्ट को क्योंकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। नोटिस द यूज ऑफ लेबल एलिमेंट इन फॉलोइंग अबव। यहाँ पे अब ये लेबल क्यों यूज किया हुआ है, बस आज इतना ही देख पाएंगे हम लोग। इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लाना था, दोनों ही के ऊपर, तो हमने क्या लिखा, लेबल, और यहाँ कुछ लिया सम एट्रीब्यूट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी लिख दिया वो यहाँ दिखेगा। और फिर मैंने क्या किया, बी आर। अगर बी आर नहीं करते तो ये इसके साथ साथ आता। जैसे अगर इसको मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, एंड इफ आई रिमूव दिस बी आर, सो ये कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका भी मैं बी आर रिमूव कर दूं तो ये यहाँ आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर लेवल में जो फॉर होता है सर, उसको आईडी से डिफरेंट रहता है या सेम ही रहते हैं वो? वो तो मैं बोला ना, इसको अभी वेट करो, अभी बताने वाला हूँ, है ना, अभी वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे देख लिया कि इनपुट फील्ड के बारे में तुम्हें पता हो गया। अभी बस लेवल में तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, बाकी सब चीजें तुम समझ चुके हो। लेबल ओपन होगा, लेबल क्लोज होगा, इनपुट ओपन होगा, तो इनपुट क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, so लेबल इज ए बाइनरी टैग, इनपुट इज ए यूनिटी टैग। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसने खुद दिया, लेबल टैग डिफाइन ए लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट। इसके किस लिए जरूरत है, स्क्रीन रीडर यूजर के लिए जरूरत है। ठीक है, the for एट्रीब्यूट ऑफ लेबल टैग, फॉर जो इसमें लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये फॉर, ये क्या है, इज इक्वल टू आईडी एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट। आईडी में जो लिखा होगा यही नाम, यहाँ पे जो नाम होगा यही नेम यहाँ पे यूज होगा फॉर के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये बताता है कि ये वाला लेबल जो है वो इस इनपुट से बाइंडेड है, और ये वाला लेबल जो है वो इस इनपुट से बाइंडेड है। तो बाइंडिंग के लिए वी आर यूजिंग दिस लेबल इज फॉर इनपुट फील्ड एल नेम, सो इट विल सर्च फॉर इनपुट फील्ड हैविंग आईडी एल नेम, और यहाँ जो भी इनपुट होगा। ये बात समझ में आई? फॉर का कॉन्सेप्ट sir. समझ में आया? Yes, sir. आईडी जो होगा इनपुट फील्ड का, फॉर में वही होगा। क्लियर टू ऑल? आस्क मी इफ यू हैव एनी इशू। लगता है 3 से ज्यादा लेक्चर्स लगेंगे। Anyway, we will deal with it. At least you should write yes or no in chat box na. Clear, clear. At least you should write sir, okay, clear, or not clear.
Okay, Prakhar is saying Kritika is good. Arjun, Aman, Swetkit, Sama, Abhay, Tanmay, good. And rest of the people? Deepika is clear, Chirag is clear. सर मेरा चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा. अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. Yes, sir, clear. This one is saying clear. Vedant, clear. Slok Sharma. श्लोक शर्मा, तो आप बोलते क्यों नहीं हो? स्पेशली आपको बुलाऊं क्या मैं? It is your responsibility. You have to learn ना. हाँ, थोड़ा सा टाइम पे आओ. तुम इतना लेट से क्यों आया क्लास में? Be on time. These are much essential. मैं जब भी बता रहा हूँ much essential, मतलब अगर ये पार्ट किसी ने छोड़ दिया ना, तो पूरा रोएगा वो पूरे कोर्स में. रिवीजन का फिर से रिवीजन नहीं होता है, एक ही बार रिवीजन होता है. आप फिर से करो. दैट्स योर पॉइंट. मैं फिर से इसको बताने नहीं जा रहा. थोड़ा क्लास को सिंसियरली अटेंड करो एवरीवन. Anyway, thank you everyone. So I am going to end the session here. We will continue this part for this week. Okay, and at the end of this module, you will feel that really there is some functionality in your web page. And meanwhile, मैं जब लैब में आऊंगा कल, लैब टाइमिंग है ना, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप सब जो है वो अपने लैब कंपोनेंट्स को फिनिश कर लो. राइट? Yes, sir. आई एम Clear. गोइंग टू एंड द सेशन.